Hi guys, in this video I will be talking about my trading journey, how it all started and what am I doing now. I know कि ये मेरी journey की अभी बस beginning है and I know कि अभी a lot of things are yet to happen, but I've learned so many things and I've grown so much over the last 3 years and I just want to share that with you guys ताकि आप वो गलतियाँ ना करें जो मैंने करा था अपनी trading journey में and how you can probably make your trading journey a little bit smoother than it was for me. About 3 years ago, when I was 18, that's when I actually started trading. I didn't start trading, but I got introduced to the world of trading. And then ever since then, I've been doing this. During that time, I was 18 years old. So I just entered college first year. I was in my second sem when I purchased this random course. A random course, I don't know, हमारे कॉलेज में कोई एडवर्टाइजर्स आए थे और उन्होंने कोई ऐप सेल करा था एंड उस ऐप में आई थिंक 5,000 या 4,000 कुछ पे करना था एंड उसके बाद वी गॉट एक्सेस टू हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट कोर्सेज लाइक शॉर्ट कोर्सेज 3 से 4 वीडियोस में इतने सारी चीज़ों के बारे में हमें सिखाया गया था जैसे कि समथिंग वाज अबाउट बिकमिंग एन ऑथर राइटिंग के बारे में कोई कोर्स था एक वीडियो एडिटिंग के बारे में एक कोर्स था एक कोई आर्ट वर्क के बारे में कोर्स था तो ऐसे इतने सारे कोर्सेज थे उस ऐप पर एंड वन ऑफ द कोर्स वाज अबाउट स्टॉक्स एंड आई थॉट आई जस्ट वॉच इट जस्ट फॉर फन बिकॉज उस टाइम पे आई ओके ऑनेस्टली आई हैव ऑलवेज बिन लाइक अ गुड स्टूडेंट स्कूल में बट आई डेंट नो कि मुझे क्या स्पेसिफिक चीज़ करना है अपने करियर में लाइक आई डेंट रियली हैव समथिंग डिसाइडेड दैट यू नो this is what I want to pursue. So yeah, I just scored like good grades in my 12th and उसके बाद I got into a good college. But I wasn't really sure कि मुझे आगे क्या करना है. तो I just knew one thing कि I did not like maths and I did not want to do anything in maths. And I had this misconception कि stocks, trading, finance and all of it is completely about maths. मुझे ये लगता था but वो सच नहीं है. Maths is hardly involved. At least in the kind of trading which I do उसमें maths ज़्यादा involved नहीं होता है. तो ये चीज़ मुझे नहीं पता था. Even बचपन में जब हम वो मूवी देखते थे ZNMD जिंदगी ना मिलेगी दोबारा when I used to see that Hrithik Roshan's character, I was like, that's such a boring job to do. And I was so sure that this is something I would never do. I was like 0% inclined towards trading during that time. So, yeah, this was quite unreal and I wasn't expecting this. After I watched those 4 videos, that was like, एक introductory lesson to stocks था and उस टाइम पे मुझे लगता था investing and trading सेम चीज़ है. मुझे नहीं पता था कि ट्रेडिंग अलग बात है और इन्वेस्टिंग अलग बात है एंड उसके बाद मैंने वो 4 वीडियोस देखे एंड मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा एंड आई थॉट आई जस्ट लर्न मोर अबाउट इट एंड दैट्स व्हेन आई वेंट टू यूट्यूब एंड आई स्टार्टेड binge watching stuff on trading. I watched इतने सारे वीडियोस मैंने बहुत ज़्यादा कंटेंट देखा ट्रेडिंग पे इवन अभी तक अगर आप मुझसे पूछोगे I think I've probably watched every single thing that's there. And like most of them, my journey also started Indian markets. Now I trade in forex, but initially when I started out, it was in the Indian markets because वो सबसे ज़्यादा accessible है and that's something जो हमारे आसपास है. So we keep hearing about it here and there on news channels and stuff like that. तो मैंने बहुत ज़्यादा videos देखना start करा था and मुझे बहुत interesting लगा. That's when I was like, the first thing I need is a demat account. And I didn't have a demat account and I recently turned 18 so I think 3-4 महीने हुए थे 18 when I turned during that time and I did not have my PAN card and a PAN card was required to open a demat account and उस टाइम पे मेरे पास नहीं था मेरा PAN card अभी बन रहा था and I think 1-2 महीने तक I was not getting my PAN card so I asked my dad if I can open a demat account using his number and his PAN card, and he agreed. Talking about my family, so my family, none of them are from this background. Nobody's from finance or trading specifically, and like dur dur tak, even my extended family mein nobody really does trading. I feel like maximum to a level, लोग इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में फिक्स डिपॉजिट्स रखते हैं उसमें में आई थिंक मेरे पेरेंट्स भी करते हैं बट स्टॉक्स इवन स्टॉक्स में भी टू एन एक्सटेंट पीपल हैव देयर पोर्टफोलियो बट ट्रेडिंग एज अ थिंग जो डे ट्रेडिंग होता है आई हैवंट सीन एनीबडी अराउंड मी डूइंग दैट बिकॉज ऑफ विच एक्सपोजर नहीं था फैमिली के अराउंड बट या यूट्यूब वॉज माई मेन सोर्स जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है एंड मैंने देखा है कि ये भी एक मेजर thing hai. This is also a way people make money. Like that's just so fascinating.
तो उसके बाद मैंने अपने डैड को पूछा कि अगर मैं उनके नाम पे डीमैट खोल सकती हूँ, एंड देन ही अग्रीड एंड वी स्टार्टेड लाइक अगेन लाइक एनीबडी एल्स माय डैड वाज आल्सो लाइक कि रिस्की होता है स्टॉक मार्केट एंड यू नीड टू बी केयरफुल एंड स्टफ लाइक दैट, व्हिच obviously it is very risky. So he gave me like 5,000, somewhere around 5,000 rupees, and he was like कि आप इसके साथ करो, ट्रेड करो, स्टॉक्स में डालो, जो करना है करो, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि आप ये पैसे लूज करने वाले हो। एंड आई वाज लाइक कैसे लूज करूंगी, मतलब मुझे नहीं पता था कि इतना आसान है कि यू कैन जस्ट लूज योर मनी इन द स्टॉक मार्केट। आई वाज लाइक ठीक है, वट एवर, लेट्स सी। एंड उसके बाद द वर्स्ट थिंग दैट कुड एवर हैपन, द वर्स्ट इंस्ट्रूमेंट यू कुड बी इंट्रोड्यूस टू, लाइक सोचो एक बिगिनर किस चीज में ट्रेड करना स्टार्ट करेगा। आई स्टार्टेड विद ऑप्शंस। या दैट आई फील लाइक दैट हैज बिन द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इन माई जर्नी। आई नाउ व्हेन आई लुक बैक आई फील लाइक काश मैं इक्विटी से इंट्रोड्यूस होती, काश मैं कुछ सेफर ऑप्शन से इंट्रोड्यूस होती, ना कि ऑप्शंस। तो या मैंने डीमैट अकाउंट बनाया उस टाइम पे, एंजल वन वाज न्यू एंड उसका कोई प्रमोशनल ऑफर चल रहा था, तो मैंने एंजल वन पे अकाउंट बनाया। एंड एंजल वन पे जैसे ही मैंने ओपन द डैशबोर्ड, लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द वॉच लिस्ट, एंड मुझे उस वॉच लिस्ट में एक चीज़ मिला, बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन। ठीक है, तो सम रैंडम कॉल ऑप्शन ऑफ बैंक निफ्टी, एंड आई थॉट दैट आई विल परचेज इट। आई डोंट नो व्हाई आई डिड दैट, आई हैड नो रीजन टू बाय दैट। तो उस मोमेंट पे मैंने बस बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन बाय करा जो मेरे सामने था, एंड विद इन अ मैटर ऑफ 5 minutes आई हैड अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट 800 रुपीज़। ठीक है, एंड उस टाइम पे मैं बहुत शॉक हो गई थी क्योंकि 5 मिनट हुए हैं, मैंने कोई रैंडम चीज़ खरीदा है, एंड आई डोंट इवन नो व्हाट वाज बैंक निफ्टी, एंड आई डोंट इवन नो व्हाट वाज बैंक निफ्टी कॉल ऑप्शन। 5 मिनट में 800 रुपये का प्रॉफिट, एंड मेरा कैपिटल बहुत ही कम था। तो फिर मैंने एग्जिट कर दिया, एंड आई वाज लाइक डैम, दिस इज सम इनसेन स्टफ। तो या दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, बिगिनर्स लक। ठीक है, फिर मुझे लगा बहुत आसान काम है, अगले दिन भी मैं उठूंगी, अगले दिन भी मैं आऊँगी और मैं यही चीज़ करती हूँ वापस। फिर मैं अगले दिन वापस जब मार्केट खुला, आई ओपन एंजल वन का डैशबोर्ड एंड अगेन आई सॉ बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन एंड आई जस्ट बॉट इट अगेन, एंड द नेक्स्ट डे आई हैड अ प्रॉफिट ऑफ 600 रुपीज, एंड आई वाज लाइक डैम, आई मेड 600 अगेन in a day. In 2 days I made like 2K, which was a very big amount back then. It still is a big amount, right? Like imagine 2 days में you make this much. I was like मुझे सब आ गया है, बहुत आसान चीज़ है, रोज सुबह उठो, खोलो, निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस खरीदो रैंडमली, बिना कोई रीज़न के, जो सबसे ऊपर है, मोस्ट मोस्ट बॉट, टॉप गेनर्स जो भी, बस खरीद लो। तो मैंने ये किया। उसके बाद मुझे लगा मुझे सब आ गया है, ये चीज़ बहुत आसान है, मैं बहुत खुश थी एंड ऑल। उसके बाद जब मैंने थर्ड डे वापस खोला एंड मैंने सेम चीज़ करने की कोशिश की, एंड आई हैड अ लॉस ऑफ अबाउट 1,000 रुपीज़। And this time, I lost all the profit that I made. I was like, okay, whatever. I came back the next day. Again, the same thing happened, and I again lost money. So, by doing this, I almost lost the entire capital, the first capital. And that's when I realized कि इसमें ये एक स्किल है and इसमें बहुत कुछ सीखने हैं. It's not just कि you're just randomly buying and selling. That's not how it is. फिर मुझे लगा कि अच्छा, तो I need to start learning about this. So then I stopped and I actually went and I started learning about options. I started learning straight away about options because मुझे बहुत fascinating लगा। फिर मुझे पता चला इक्विटी भी कुछ होता है, स्टॉक्स क्या होते हैं, ऑप्शंस क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स क्या होता है, एंड आई लर्नड सारी चीज़ों के बारे में। लाइक एवरीवन, ऑप्शंस ने मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइट किया, एंड लाइक मुझे ऑप्शंस में ही सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था क्योंकि ऑप्शंस आर, सी अगेन, ऑप्शंस आर वेरी वेरी रिस्की, बट अगेन ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा मनी यू कैन मेक एज कम्पेयर टू इक्विटी। सो आई लर्नड अबाउट ऑप्शंस, आई लर्नड अबाउट निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक ऑप्शंस एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, and I started watching even more YouTube stuff. ठीक है, like any other beginner, I got introduced to tips, the Telegram groups, and all of that stuff. And I think that's my second mistake. I joined these Telegram groups which were giving tips. ठीक है, so they basically, I know a lot of you can relate to this. They give you tips कि आज ये खरीदो, आज ये बेचो, and profit होगा and everything. And I fell for it like any other beginner. And I joined all these trader groups on Telegram, which God knows क्या था वो सब. And मैंने फिर करा जैसे वो लोग जो जो बोल रहे थे ये खरीदो, मैं वो खरीदती थी,
वो लोग बोले थे ये बेचो, मैं वो बेचती थी, एंड उससे कुछ नहीं हुआ. अगेन आई लॉस्ट माई एंटायर कैपिटल फॉर द सेकेंड टाइम. ठीक है, लाइक बाय दिस टाइम आई वाज लाइक डैम, ऐसे मतलब करोगे तो तुम्हारे बस पैसे जाएंगे, किसी और पे तुम रिलाई नहीं कर सकते, और ये टिप्स एंड ऑल को ट्रस्ट नहीं कर सकते. आई लर्न इट द हार्ड वे. नाउ आई जस्ट फील लाइक काश कोई होता उस टाइम पे जो मुझे बताता कि पहले तो ऑप्शन से स्टार्ट मत करो, दूसरी चीज़ टिप्स विप्स मत लो, ये सब नहीं चलता है. तो या दिस इज हाउ आई स्टार्टेड. एंड one more mistake which I think I did back then was I bought, I spoke to a lot of people, and I had many mentors in my journey. It wasn't like one and two. I still have mentors, and I have like two really good mentors now. But उनसे पहले भी बहुत लोग रहे हैं. I had like some 6 7 people जिनसे मैंने सीखा, जिनके साथ मेरा कुछ था. मतलब कुछ ना कुछ मैंने सीखा, कोई न्यू स्ट्रैटेजी, कुछ indicators, whatever. But I just feel like I should have given it time. I should have actually first gone through स्टफ बाय माई सेल्फ इन द सेंस कि यूट्यूब पे उनका फ्री कंटेंट देखो, एंड अगर अच्छा लगे तब तुम उनका पेड स्टफ लो. एक वीडियो देख के अच्छा लगने के बाद सीधा मैंने पेड कंटेंट ले लिया, एंड देन आई एम लाइक कि इतना वर्थ इट था भी नहीं. तो मैंने वो गलती करी ना. आई फुली बिलीव कि यू नीड टू हैव अ मेंटर, बिकॉज द मेंटर्स आई हैव नाउ, they have quite literally changed my life. So I know कि you need to have a mentor in your trading journey. But I just wish I found these people maybe like 2 years ago. इट वुड हैव बीन ईजियर. बट ठीक है, मैंने सब कुछ फिर खुद ही करा. मैंने इतने बुक्स खरीदे हैं, लाइक यू कैन इवन सी आई स्टिल रिकमेंड, देर आर लॉट ऑफ ट्रेडिंग बुक्स विच आई वुड रिकमेंड. यू कैन स्टार्ट विद ट्रेडर इन द जोन, सबने पढ़ा ही होगा, बट दैट्स वन ऑफ द बेस्ट बुक्स विच रियली रियली talks about the trading psychology which you need to have. Yeah, so उसके बाद I started learning, and then I learned about indicators and all of that stuff, moving average, volume, price action, triangle, rectangle, जो भी है सब कुछ मैंने करा है. And I tried to make stuff work, and didn't really work for me in the Indian markets. I mean, it did work. There have been days where I made like a lot of money, but there have been days where I haven't. And end of the day, if you मेरा आई वॉज इन दैट वन फेज जहाँ पे मैं बस ब्रेक इवन पे थी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. ना मेरा प्रॉफिट हो रहा था, ना मेरा लॉस हो रहा था, दोनों हो रहे थे. एंड देन बस मैं ब्रेक इवन थी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. ठीक है, एंड उसके बाद आई वॉज जस्ट लूजिंग इट, बिकॉज at this point I was fully convinced that this is what I want to do, but I didn't know how I wanted to do this because I wasn't really profitable at that time. ठीक है, एंड फिर मुझे लगा कि स्कैल्पिंग करते हैं, शॉर्ट टाइम पे ट्रेड करते हैं, एक एक सेकंड में बाय सेल कर लेते हैं. मैंने वो एक्सप्लोर किया. अगेन आई नो कि यूट्यूब पे देर आर लॉट ऑफ पीपल हु डू स्कैल्पिंग एंड दे आर प्रिटी प्रॉफिटेबल इन स्कैल्पिंग. बट या सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि मुझे भी स्कैल्पिंग करना चाहिए. तो मैंने वो एक्सप्लोर करा, बट इट वॉजंट फॉर मी बिकॉज आई यूज टू पैनिक अ लॉट व्हेन आई वाज लुकिंग एट माई PNL इतना ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग. सो दैट वॉजंट फॉर मी. एंड देन आई मूव्ड ऑन टू स्विंग ट्रेडिंग, क्योंकि मुझे लगा स्विंग ट्रेडिंग में कम स्ट्रेस होता है, तुम ओवरनाइट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करते हो. बट ओवरनाइट जब मैं पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करती थी तब मुझे अलग टाइप का स्ट्रेस होता था कि मेरे पोजीशन को क्या हो रहा होगा, मैं ओवरनाइट मेरे पोजीशन कितने रिस्क में है, कल क्या होगा, गैप अप होगा, गैप डाउन होगा. दैट रियली कॉज्ड एन इशू. So even swing trading wasn't for me. After exploring all the kinds of trading, I finally realized that intraday is for me, which means कि मैं buy and sell करती हूँ same day. मैं maximum somewhere around 1 to 5 hours तक I hold my trades now, and I know this really works for me because एक stability है अब मेरे trading में. तो वो एक बात मैंने रियलाइज़ करा था. अगेन आई जस्ट फील लाइक अ लॉट ऑफ दिस स्टफ नो वन कैन टेल यू, यू नीड टू एक्सपेरिमेंट ऑल ऑफ दिस, तभी पता चलता है क्या चीज़ आपके लिए है एंड क्या आपके लिए नहीं है. फिर उस टाइम पे भी मैं कॉलेज में ही थी, तो इंडियन मार्केट्स के टाइमिंग्स वर रियली वियर्ड बिकॉज 9 to 3 एंड 9 to 3 आई यूज टू बी इन क्लासेस. इन कॉलेज इट वॉज रियली हार्ड फॉर मी टू ट्रेड ड्यूरिंग दैट टाइम, टू अ पॉइंट दैट I couldn't trade. I actually couldn't trade. That was the first issue I had, timings. ठीक है, एंड उसके बाद एक और चीज़ मैंने रियलाइज़ किया was कि मेरे पास कोई अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं थी जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, एंड प्रॉपर स्ट्रैटेजी. बिकॉज जो भी मैं जोन्स बनाती थी, जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंसेस जोन्स बनाती थी, अगले दिन गैप अप गैप डाउन की वजह से मेरा पूरा एनालिसिस इनवैलिडेट हो जाता था. दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द रीजन वाई आई मूव टू फॉरेक्स. बट या इंडियन मार्केट्स हैव प्लेड
a very, very major role in my journey so far. And then again, if your parents think that trading is gambling, or if your friends or jo bhi hai, if they think कि trading is gambling, it's honestly not their fault, because that's how they have been programmed, and that's how, मतलब कोई चीज़ उनको बचपन से सिखाया गया है, तो उन्हें क्या पता? या फिर कोई चीज़ जो उन्होंने कभी नहीं किया, अपने पूरे लाइफ में उन्होंने कभी ट्रेड किया ही नहीं, तो उन्हें कैसे पता होगा इस चीज़ के बारे में कोई चीज़? तो इट्स वेरी फेयर फॉर देम टू से कि इट्स गैम्बलिंग. It isn't. I understand. It's completely not gambling. It's very, very different from gambling. I agree, but I also know where they're coming from, because उन्होंने इतने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस सुने हैं ट्रेडिंग में. तो उन रादर देन पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस ज़्यादा उन्होंने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस सुने हैं, जिसकी वजह से वो ये बोलते हैं. बट once you actually get funded, or once you actually get payouts, and once you become consistently profitable, I'm sure they'll come around and they'll understand. So if you think कि it's hard for you to convince your parents, or if it's hard for you to convince your people around you, then that's okay, because once you get payouts, then that's when people will believe you. And it really doesn't matter, because अगर किसी ने कोई चीज़ करी नहीं है, तो उन्हें उसके बारे में कैसे पता होगा? जो तुम अपने आस-पास देख रहे होते हो, जो तुम अपने आस-पास कोई नेगेटिव चीज़ सुन रहे हो उस चीज़ के बारे में, तो ऑब्वियसली यू विल बिलीव दैट ओनली. So it's really not their fault. My parents have been supportive about this. Yes, they did not understand what I was doing, and they weren't really 100% sure that this is something I could make a career out of. But yeah, with time and with, like I mentioned, जैसे जैसे तुम consistently profitable होते हो, they do come around. So that's gonna happen eventually. तो हाँ, उसके बाद भी I was very interested every single day. This is what I used to do. I used to trade. I used to sit in the college and trade. I used to come home and trade. मैं यही करती थी. Then I got into commodities. मैंने सब कुछ explore किया. I know about every single indicator. I've read every possible book. I've watched every possible video. I've done everything, and I had so many mentors, like I said. But मेरा मेन चीज़ यही था कि टाइमिंग मेरे लिए बिल्कुल feasible नहीं था इंडियन मार्केट का, and I didn't know what to do because I was still in college, so it wasn't like I could quit college. तो वो एक थिंग था. उसके बाद आई वॉज इंटर्निंग एट दिस प्लेस लाइक अ समर इंटर्नशिप थिंग. वो एक एडवाइजरी फर्म थी, एक स्टॉक एडवाइजरी फर्म थी. देयर आई मेट अ फ्रेंड, एंड दैट पर्सन इंट्रोड्यूस मी टू समथिंग कॉल्ड एज फॉरेक्स ट्रेडिंग. ठीक है, तो उससे पहले मुझे नहीं पता था फॉरेक्स ट्रेडिंग भी कुछ होता है, और मुझे बस इंडियन मार्केट्स के बारे में पता था, एंड आई वॉज फुल्ली सेटिस्फाइड विद इट. So that's when I got introduced to forex market, and I started exploring it. This was back in 2023. Yeah, I got introduced in 2023, maybe mid of 2023, and that's when I got to know about forex. फिर मैंने forex के बारे में जानना सी मतलब स्टार्ट किया. फिर मैंने forex के बारे में इतनी बुक्स पढ़े, इतने वीडियोस देखे, and that's when I understood कि forex market is the biggest market in this world. जितना इंडियन मार्केट है उसका 200-300 टाइम्स बड़ा है forex market. तो बहुत वॉल्यूम है, बहुत लिक्विडिटी है. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट forex market is that टाइमिंग्स. ठीक है, तो रात को भी आई कैन ट्रेड, सुबह ऑल्सो आई कैन ट्रेड, डिपेंड्स ऑन द लंडन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन. सो आई वाज लाइक आई शुड चेक दिस आउट एंड आई शुड एक्सप्लोर दिस. देन आई स्टार्टेड डूइंग दैट, एंड मुझे फिर पता चला प्रॉप फर्म्स के बारे में. ठीक है, प्रॉप फर्म्स जो तुम्हें फंडिंग देती हैं ट्रेड करने. नाउ ऑल दिस वाज अ वेरी न्यू कंसेप्ट. So that's when I started learning more about forex and getting into this stuff, watching all of these videos, and I got to know about prop firms. These firms provide you capital, and then you can trade using their big capital, lakhs of capital, and उससे तुम जो भी प्रॉफिट बनाती हो तुम 80% रख सकते हो, बाकी कंपनी रखती है. एंड दिस वॉज रियली फैसिनेटिंग, राइट, बिकॉज आई डिड नॉट हैव अ बिग कैपिटल, है ना. तो अगर आपके पास बहुत बड़ा कैपिटल है तो आप उसमें थोड़ा भी प्रॉफिट बनाओ तो वो बहुत ज़्यादा है. तो दैट्स व्हाट रियली रियली एक्साइटेड मी, एंड आई वाज लाइक टाइमिंग अच्छा है, सबसे बड़ा मार्केट है, पैसे भी कोई कंपनी देना चाहता है, तो लेट्स गेट इनटू दिस. आई स्टार्टेड फॉरेक्स इन 2023. अगेन same mistakes. I did not have a strategy. I had a lot of mentors. I did different kind of things, and I lost some money and I made some money. Nothing really happened. Nothing worked out for me. During 2023, I was gonna give up. 2023, 2024 starting, I was really gonna give up. I was like, this is not for me. I haven't been able to achieve consistency. I made some money, I lost some money, but nothing has been consistent. I thought कि मेरा हो गया है ट्रेडिंग से, ये सब फेक है, ऐसा कुछ नहीं होता है, शायद everybody was right. This isn't something you can make a career out of.
and it's realistically not possible to get funded by a prop firm. And I completely lost faith because at that point nothing was working out for me. Okay, I did not have a strategy that works. I did not have any guidance, and I was so confused because I had so many mentors. Okay, and I feel like that was the lowest point of my trading journey because I was actually considering quitting trading, and I was like, I'll just let this be, bro. This is not for me. So, and that was a really dark time for me, and I just feel like I'm so glad that I stayed during that phase because I was this close to just leaving this stuff. So if you're in that phase right now, I'm just saying that if you really want it, you can make things work. And the best part about this was कि, even though मुझे even though I really, really wanted to quit, I still had this little bit of faith in me that I can make this work. And that's when I started learning more and, finding strategies and finding two really nice mentors. And I learned stuff and I backtested so much. I read a lot of books. And finally, I've been able to make things work. So then I got funded in 2024 ka end. And ever since then, yeah, I've been funded. And now I'm also scaling my capital, and I've also been able to take consistent payouts. Right now, I'm saying this very normally, and this is probably not a big deal for many people, but for me, I really thought that this wasn't possible. मतलब I fully believed अब कि कुछ नहीं होगा इस चीज़ में, कुछ रखा नहीं है, कैसे funded होगे, मतलब क्योंकि okay, whenever you start your funded accounts, whenever you start challenges, you are going to breach your challenges, your initial challenges you're going to breach फॉर वट एवर रीज़न, या तो आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं होगी, या आप ओवर ट्रेडिंग करते हो, या आप ज़्यादा रिस्क करते हो, कोई भी रीज़न हो, यू आर गोइंग टू ब्रीच योर अकाउंट्स, ठीक है, इनिशियली. तो आफ्टर आई ब्रीच टू ऑफ माई अकाउंट्स आई वाज लाइक, you know what, this is not going to work because I can't keep just buying challenges, losing it, losing money, failing it. And it just felt like I was wasting my time because at this point I had already given 3 years of my life, okay, and I haven't been able to consistently achieve profitability. And at this point it wasn't even like I was in like loss or I was in like profit. I was able to make money but I wasn't able to sustain it. I was net में अगर मैं देखूं मैंने कुछ नहीं बनाया पूरे महीने में, यही होता रहा. And one thing which I think about whenever I talk about my trading journey now is that कि शुरू में I used to give myself a deadline, ठीक है, इस साल के end तक I should be funded, इस महीने के end में I need to have 10% profit. But having such deadlines really didn't help, and it's not going to help you too, because if you have that kind of a stress, that kind of a burden, then you won't be able to do it. And the moment I stopped having deadlines and I was like, I will just follow my plan and I'll just try to get funded. If it happens, good. If it doesn't happen, it doesn't happen. That's when it took a random day for me to get funded. So I'm just saying that don't have a deadline, don't have that sort of a burden or stress on you. In fact, throughout my entire journey, I've always had like another source of income, be it freelancing or anything. I've always had another source of income because I really, really believe that you need to have a stability. So you need to have some income which is stable, which is other than trading, because there are going to be months where you are going to be at a net loss. What are you going to do उस महीनों में? You need to have another source of income, because अगर आपके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है कि ट्रेडिंग के अलावा आप कहीं से पैसे नहीं कमा सकते हो, तो that affects your trading psychology and that really really affects your decisions. तो decision making skills उससे genuinely affect होती हैं. तो I fully believe कि you need to have multiple sources of income, चाहे आप कितनी भी profitable हो जाओ, चाहे आपके पास कितनी भी बड़ी account है. So yeah, it's been a very, very nice journey and I got to learn a lot of things, and I'm looking to be funded with 100K this month, hopefully, touch wood. I just want to say that I've had days where I was almost going to give up. I was done with trading, I was done with everything, and I was looking to just stop this stuff because, see, no one really understands what this is now. No one really understands what you're going through except yourself. नॉट ओनली इन ट्रेडिंग, आप कोई भी चीज़ करो, सिर्फ आपको पता है कि आपको कैसा फील हो रहा है किसी चीज़ के बारे में, एंड हाउ मच अ पर्टिकुलर थिंग मैटर्स टू यू, और why even if you're stressed, even if you're really really upset, you had a bad trading day, nobody around you knows about it because only you know about it. And there were moments where I was like fully done and I was actually going to give up, but I'm so glad that I didn't. And you guys need to know that if you are in that phase where you're about to give up, then just stay and just be there
and try to give your 100% even if you don't feel like it, because if you really really want it then you can obviously do it, ठीक है. एंड मुझे भी लगता था फंडेड नहीं हो सकते, प्रॉप फॉर्म्स कुछ नहीं होते हैं, ऐसे कैसे पैसे कमा सकते हो, बट I believe it now because I've seen it and I'm doing it myself. So I'm like an example and I know that this is possible now. And I also know that there is no going back now. Once you've seen this, there is no going back. But the only thing is that I am really, really grateful for everybody that has supported me in my journey, because, yeah, my parents did support me a lot. And even I had really, really good mentors and I had a lot of support. I must say that it matters. But at the same time, it is a very lonely journey because nobody knows what you're going through, nobody knows what you're doing, nobody understands. So it's completely your individual journey and nobody is going to save you here. People say ki, if you don't want to work under someone, just be your own boss and start trading. But that comes with a lot of flaws also, right? Imagine you don't have a boss who's checking what you're doing. अगर आप 1 करोड़ का लॉस भी कर लो, कोई चेक नहीं कर रहा आपको, आप खुद ही चेक कर रहे हो, तो आप किसी के लिए लाइबल नहीं हो. बट दैट इज अ गुड थिंग, या इफ यू वांट टू मेक योर ओन डिसीजंस विदाउट आस्किंग समवन, यू कैन डू दैट. बट इट इज ऑल्सो अ बैड थिंग because nobody is checking you. No one's going to be like, bro, you made this much of a loss. You're not going to be answerable to anybody, which is a good thing, but it is also a very bad thing. So if you think कि उस mentality से तुम trading कर रही हो कि कोई है नहीं जिसको तुम आंसर करते हो, then that is wrong. And also, I feel like patience is extremely, extremely important. If you're not patient, then you'll not be able to make it in this industry. That's one thing which I've learned, because I was so, so, so greedy initially and I was so in like a hurry to get funded. I was in a hurry to just make money. But now when I look back, I just feel like I could have been more patient and I could have just focused on learning the skill rather than being in a hurry to get funded. I know that Insta पे देख के and हर जगह देख के लगता है कि this is gonna be very simple and very easy. A person is able to make money within a matter of seconds and stuff like that. But that is not easy. Only that person knows कि उसके पीछे कितना ज़्यादा उसने मेहनत किया है. Only I know कि मैंने कितने sleepless nights देखे हैं. Only I know the moments I had, and only I know कि those moments जहाँ पे मैं question करती थी अपने decision को, if I really want to do this or if I don't want to do this. मैंने कितने hours, कितने days spend करे हैं अब trading view पे अपने trades को back test करते हुए. कितने books पढ़े हैं, कितना content देखा है. Just putting in that much of effort, that is completely required, because now when I look back, I know that I've given it way too much time to be profitable. Now it hasn't been easy because I had to put in so much of work and so much of effort. ठीक है. जब मैंने स्टार्ट करा था 3 साल पहले, जो भी 2 साल 3 साल, तब मुझे लगा था कि I'll just take a year and in 1 year I'll be profitable, or maybe ज़्यादा से ज़्यादा I'll take 1.5 year. But that didn't happen, right? Now when I actually look back, it actually took entire 3 years. ठीक है, तो it's not gonna be easy, because if it was that easy, अगर सही में बहुत आसान होता तो हर कोई कर रहा होता, हर कोई ये कर रहा होता. तो आसान नहीं है, and I'm not gonna say कि आसान है, and I know कि अभी भी मुझे constantly grow karna, and I know there's still a lot more to learn. But this has been my journey so far, and I know it's just the beginning, but it's been such a nice journey and such a good journey, and I just feel like the hard part is over, and I hope that's true. The hard part is over, the struggles are over. Now I just feel like I know what I'm doing, and I know the kind of mistakes I made in the past, and I'll probably never make it. If there's one tip which I would give you guys, it would be to, whenever you're starting your funded account or whenever you're buying a new account, हमेशा सबसे छोटे अकाउंट से स्टार्ट करो, 5K से स्टार्ट करो, बिकॉज पहले 1-2 अकाउंट्स तो ब्रीच होंगे. चाहे आप जितनी भी कॉन्फिडेंट हो, चाहे आपके पास कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी हो, यू आर गोइंग टू ब्रीच योर अकाउंट. ठीक है. सो जब पता ही है कि ब्रीच होने ही वाला है, तो छोटा अकाउंट लो और छोटा अकाउंट ब्रीच करो, एंड उसके बाद मूव ऑन टू लाइक अ बिगर अकाउंट. दैट इज समथिंग विच आई डिडंट डू, and I wish that I would have done this. That's why I'm just telling you guys to do it. So this has been my journey so far, and I'm so, so, so grateful. And I also know that a lot of you guys who are watching this video, I wish that even you guys get funded soon, and I hope you become consistently profitable. I will also be making a video on passing my 100K account. So stay tuned for more such videos.